ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ସବମିଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2022 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଇଂଲିଶର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରୁ କେମିତି ଇଂଲିଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରିଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି 9th କ୍ଲାସ୍ ଏସ୍ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ। ସେହି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପାଇଯିବ, ନଚେତ୍ ଏହି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପରିସର ଭିତରକୁ ନେବ। ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଗିସ୍ ବ୍ରଦର ୱାଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ମ୍ୟାଗିସ୍ ବ୍ରଦର କ'ଣ ଥିଲା ନା ମ୍ୟାଗିସ୍ ବ୍ରଦର ଗୋଟେ ସୋଲଜର ଥିଲା। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ଯିବା। ଜାନକୀ ଲର୍ନ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍ ଇନ୍ ଦ ଆରବିଆନ୍ ସି ଅଣ୍ଡର ଏ କୋଚ୍ ନେମ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ କେଉଁ କୋଚ୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଜାନକୀ ସ୍ୱିମ୍ ମାନେ ଶିଖୁଥିଲା ଆରବିଆନ୍ ସିରେ କେମିତି ପହଁରିବା ପାଇଁ। ପିଲେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିନେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦି ପରମିସିବୁଲ୍ ଏଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭେହିକିଲ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। କେତେ ବର୍ଷରେ ପରମିଶନ୍ ମିଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ନା 18 ବର୍ଷରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କାଲାମ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ କଲେଜ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦ ଏଭଭ୍। କ'ଣ ଅଲ୍ ଦ ଏଭଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହୁ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ୱାଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ସ୍କାଉଟ୍। ପିଲେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାମୀଜ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରୋନ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରୋନ୍ଡ ଇନ୍ ଡେସ୍ପେୟାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ହରିଡଲି ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡ୍ୟାସ୍। 8 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବେଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର ଯିବା ସ୍ୱାମୀଜ୍ ଫାଦର ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମ। ପିଲେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀଜ୍ ଫାଦର ଟୋଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍ସ। ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍ସ। 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ଯିବା ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ପେକ୍ଟର୍ସ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 12 ନମ୍ବର ଯିବା ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଥଲେଟ୍ ଫେଲ୍ ଟୁ ଦ ଡ୍ୟାସ୍। 12 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସ୍ଫାଲ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 13 ନମ୍ବର ଯିବା ଅଲ୍ ଦ 9 ରନର୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ଦେୟାର ଡ୍ୟାସ୍। 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜଏଣ୍ଟ ଦେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦ ଆଥଲେଟ୍ସ ହାଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫେସେସ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ମାଷ୍ଟରଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ପିଲେ 14 ନମ୍ବରର ବିମିଂ ହେବ କ'ଣ ଦି ଆଥଲେଟ୍ସ ହାଡ୍ ବିମିଂ ଫେସେସ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ମାଷ୍ଟରଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଯିବା ଦ ଆଥଲେଟ୍ସ ହାଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ମେନି ଡ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରେନିଂ। 15 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଥସ୍। କ'ଣ ହେବ ୱିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଥସ୍। 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 16 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେ ଆର୍ ସୋ ଅନଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦ ଏଭଭ୍। କ'ଣ ବୋଲେ ଅନଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ର ମିନ୍ ହେଉଛି ଅନନୋନ୍ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ହେବ, ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର ହେବ। ତେଣୁକରି ଅଲ୍ ଦ ଏଭଭ୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବେଟର୍ ଡୁଏଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲାରାମ୍ସ। କ'ଣ ହେବ ବେଟର୍ ଡୁଏଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଆଲାରାମ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଲ୍ୟାକ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗଡ୍ ଆରୋଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ପିଲେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ। କ'ଣ ପିଲେ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର ଯିବା ଦ ପୋଏମ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲ୍କ୍ରି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍କ୍ରି ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋନି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 19 ନମ୍ବର ସରିଲା। 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ କନସିଡର୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ 20 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରୁଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 21 ନମ୍ବର ଯିବା ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ ଦ ଇମେଜ୍ ସିମ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ସାଇଜ୍। କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ ଗ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ସାଇଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ
22 नंबर प्रश्न देखिए मेकिंग एन इमेज वाज डैश फॉर गोविंदा प्ले 22 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची चाइल्ड्स प्ले कौन हम मेकिंग एन इमेज वाज चाइल्ड्स प्ले फॉर गोविंदा। परवर्ती प्रश्न 23 नंबर जीवा ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड आज ही एंटर डैश प्ले 23 नंबर ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर द ग्रोव। परवर्ती प्रश्न प्ले 24 नंबर जीवा 24 नंबर प्रश्न देखिए द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड वाज रिटन बाय डैश प्ले 24 नंबर कौन हम ना मुल्कराज आनंद तेणुक ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर मुल्कराज आनंद। परवर्ती प्रश्न 25 नंबर जीवा अम्मू क्राइड ए डैश एंड फॉलोड हर फादर प्ले 25 नंबर कौन हम ग्लास ऑफ टी अम्मू क्राइड ए ग्लास ऑफ टी एंड फॉलोड हर फादर। परवर्ती प्रश्न 26 नंबर जीवा 26 नंबर प्रश्न देखिए द ओनर ऑफ द बिग हाउस हैड डाइड दैट मंथ्स एगो प्ले 26 नंबर सठिक उत्तर होची ए कपल ऑफ मंथ्स एगो। परवर्ती प्रश्न 27 नंबर जीवा अम्मूस यंगर ब्रदर वाज डैश अम्मूस यंगर ब्रदर वाज चिन्नी कौन हम पिले चिन्नी हम सठिक उत्तर ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न 28 नंबर जीवा 28 नंबर प्रश्न देख कौन रही अम्मू वाज टेकन ए बैक बाय हर डैश काइंड वेज पिले देख 28 नंबर ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर एम्प्लॉयर्स कौन अम्मू वाज टेकन अबैक बाय हर एम्प्लॉयर्स काइंड वेज। परवर्ती प्रश्न 19 नंबर जीवा मिसेस मोहन वाज ए रिटायर्ड डैश मिसेस मोहन वाज ए रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस तेणुकर ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले 30 नंबर जीवा देख 30 नंबर देखिए मिसेस मोहन ऑर्डर आमू टू कम एट डैश इन द मॉर्निंग पिले 30 नंबर सठिक उत्तर हूँ 9 इन द मॉर्निंग ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 31 नंबर जीवा ही हैज बीन स्टेइंग हियर डैश 1995 पिले कौन हम सिंस कौन कर पिले एटा सिंस ऑफ प्रिपोजिशन कौन सिंस ही वाज बीन स्टेइंग हियर सिंस 1995। परवर्ती प्रश्न पिले जा 32 नंबर प्रश्न को लक्ष्य कर लेट्स गो फॉर ए वॉक इट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सेंटेंस पिले एटा कौन हम ना इन इंपेरेटिव सेंटेंस एटा को सेंटेंस इंपेरेटिव लेट्स गो फॉर ए वॉक इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस। परवर्ती प्रश्न 33 नंबर जीवा लाइफस्टाइल ऑफ पीपल डैश वेरी फास्ट लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इज चेंजिंग वेरी फास्ट कौन हम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। परवर्ती प्रश्न 34 नंबर जीवा पिला मैंने 34 नंबर प्रश्न देख डैश यू लाइक ए कप ऑफ टी वुड यू लाइक कौन कर वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। परवर्ती प्रश्न 35 नंबर जीवा द लिटिल गर्ल इज ऑलवेज टॉकिंग द डिटरमाइनर इन द सेंटेंस इज डैश पिले 35 नंबर सठिक उत्तर हूँ द कौन पिले द हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले 36 नंबर जीवा द प्लूराल फॉर्म ऑफ गोज इज डैश पिले प्लूराल फॉर्म गोज कौन हम ना गिज तेणुकर सठिक उत्तर हूँ GESE ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले 37 नंबर देख चूज द करेक्ट सेंटेंस पिले 37 नंबर करेक्ट सेंटेंस कौन ना दिस इज ए ब्यूटीफुल ओल्ड वुडन डाइनिंग टेबल ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर दिस इज ए ब्यूटीफुल ओल्ड वुडन डाइनिंग टेबल। परवर्ती प्रश्न पिले 38 नंबर जीवा हिज बिहेवियर इज डैश 38 नंबर प्रश्न देख कौन देती हिज बिहेवियर इज डिसगस्टिंग ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले 39 नंबर जीवा सी सांग फेयरली वेल द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डैश पिले फेयरली एडवर्ब कौन ये कौन रही ना डिग्री कौन पिले एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। परवर्ती प्रश्न पिले 40 नंबर जीवा देख 40 नंबर देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस पिले 40 नंबर करेक्ट सेंटेंस कौन हम ना इट रेन्ड हेविली एट 6 o'clock इन द इवनिंग ऑप्शन सी हूँ करेक्ट सेंटेंस कौन इट रेन्ड हेविली एट 6 o'clock इन द इवनिंग। परवर्ती प्रश्न पिले 41 नंबर प्रश्न हूँ देख कौन देती द चाइल्ड इज लिसनिंग टू माई स्टोरी डैश द चाइल्ड इज लिसनिंग स्टोरी टू माई क्यूरियसली हम कौन हम क्यूरियसिटी जोटा देती ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 42 नंबर जीवा दे डू नॉट बिलीव मी ए सिंगल वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स विल बी डैश सिंगल वर्ड कौन हम डू नॉट बिलीव डिसबिलीव कौन बोले डिसबिलीव डू नॉट बिलीव मीनिंग जहाँ डिसबिलीव मीनिंग से। परवर्ती प्रश्न पिले 43 नंबर जीवा कौन देती इन माई चाइल्डहुड आई डैश सिंग वेल पिले 43 नंबर कौन हम कुड इन माई चाइल्डहुड आई कुड सिंग वेल। परवर्ती प्रश्न पिले 44 नंबर जीवा ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन फुट इज कॉल्ड ए डैश पिले पर्सन हु इज ट्रैवलिंग ऑन फुट इज कॉल्ड ए पेडेस्ट्रियन जो देती ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले 45 नंबर जीवा द फास्ट रोहिणी सैटेलाइट वाज लॉन्च डैश ऑर्बिट इन 1980
पिले 45 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची इनटू कोन करिवो इनटू ऑर्बिट इन 1980 पिला माने 46 नंबर को देखो ए ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट पर्सन इज कॉल्ड डैश पिले देखो 46 नंबर सठिक उत्तरटा तुम मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब देखा केते पिला सठिक उत्तर दउछंती परवर्ती प्रश्न 47 नंबर जीवा आई डिड दिस वर्क डैश द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप पिले 47 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हम फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप परवर्ती प्रश्न 48 नंबर जीवा आई कुड हियर द डैश ऑफ द क्लॉक आई शुड हियर द डैश ऑफ द क्लॉक कौन हम टिकिंग टिकिंग होची सठिक उत्तर TICKING जोटा रही ऑप्शन सी आई कुड हियर द टिकिंग ऑफ द क्लॉक परवर्ती प्रश्न 49-50 नंबर जीवा पे लक्ष्य कर 49 नंबर ही वाज ब्लेम्ड फॉर हिज डैश बिहेवियर तो देखो 49 नंबर सठिक उत्तर होची ही वाज ब्लेम्ड फॉर हिज इनपोलाइट बिहेवियर ऑप्शन सी होची सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न पे 50 नंबर जीवा ही सेड टू मी डू यू नो द आंसर इट्स इनडायरेक्ट स्पीच इज डैश प्लेयर इनडायरेक्ट स्पीच कौन हम ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर ऑप्शन बी होची सठिक उत्तर ठीक है पिला माने रहउची नेक्स्ट क्लास रे भेट हबा सेतल समस्त विदाय।